Everybody knows Yateen ji, and he is going to talk and interactive. That means ask questions, participate in the program. That will make it more productive and interesting for all of us. Okay, Yateen ji, welcome. Good morning. Yeah, And good it's evening, everybody. Thank you so much. ठीक है. So, I was listening to Dr. Beta, and looks like I'm not so sure if she's a psychiatrist or so, but something related to emotions, psychology, that kind of discussion was going on. So, let us discuss a similar topic today. Okay, we talk about medicines. अच्छा मुझे हिंदी में बोलना है ना. I'm so sorry. दिमाग से निकल जाता है, उसी फ्लो में चले जाते हैं ना हम लोग. तो थोड़ा सा अपने इमोशंस, अपने इम्प्रेशंस, हम किस तरह से विचार करते हैं, कैसी बातें करते हैं, हाँ, उसके बारे में आज थोड़े डिस्कशंस करते हैं. तो योग वशिष्ठ में हमने कभी मोक्ष के 4 द्वारपाल, द 4 डोर कीपर्स टू द टेम्पल ऑफ लिबरेशन, टेम्पल ऑफ निर्वाणा, ये देखे थे. तो उनमें सबसे पहला था शम, जिसको साधारण भाषा में सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है. दूसरा था विचार. तीसरा संतोष, कंटेंटमेंट. और चौथा था साधु संगति, कंपनी ऑफ होली वंस. तो इनमें से आज हम थोड़ा संतोष के बारे में देखते हैं. संतोष क्या है? तो पहले ये देखते हैं कि असंतोष क्या है. हाँ, जिसमें देयर इज नो कंटेंटमेंट, और मे बी वी आर नॉट हैप्पी, वी आर ग्रजिंग, कंप्लेनिंग, इस तरह की बातें होती हैं. तो ये कहाँ कहाँ आता है और किस किस जगह में आता है? यूजुअली हमने जब उसके बारे में सुना है कि हाँ, कंटेंटेड रहो, सेटिस्फाइड रहो, तो वो यूजुअली हमारे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में ज्यादातर कहा गया है. फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक सिचुएशन, कि मेरे पास इतना पैसा है, उसमें खुश रहो, जॉब में इतना मिल रहा है, उसमें खुश रहो, या बिजनेस ऐसे चल रहा है, उसमें खुश रहो. हाँ, बी हैप्पी, बी कंटेंटेड. और हमारे कई सारे स्क्रिप्चर्स, संत भी कहते हैं कि जो मिला है उसी में खुश रहो, 2 वक्त की रोजी रोटी चल रही है, अच्छा है. हाँ, इस तरह से बातें कही जाती हैं. तो यह रहा मटेरियल एंगल. लेकिन इसमें और कुछ बातें होती हैं. तो हम में काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो पैसे के बारे में सेटिस्फाइड हैं, चाहे कम ज्यादा रहेगा, या प्रॉपर्टी उसके बारे में भी शायद कम ज्यादा रहेगा तो भी एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमारी सहसा कंप्लेन रहती है. वो है हमारे करीबी लोग, जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, जहाँ पे हम ऑफिस में वगैरह जाते हैं, जो कलीग्स हैं. तो ऐसी कई सारी बातें हैं कि जहाँ पे हमारे मन में वो कंटेंटमेंट नहीं रहती. जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या मार्क कम लेकर आते हैं, या ऐसे कुछ होता है, या फिर ठीक से बिहेव नहीं करते, इस तरह की कंप्लेंट्स हमें रहती हैं. यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि यूएस के कंपैरिजन में उल्टी सिचुएशन है, कि पेरेंट्स यहाँ पे हैं, बच्चे यूएस यूके कहीं तो चले गए हैं, और ये पेरेंट्स कंप्लेंट करते रहते हैं कि वो देखते नहीं, या रेगुलर फोन नहीं करते, बात नहीं करते, हमारा ध्यान नहीं रखते. तो उस तरह की भी कंप्लेंट्स ये आती रहती है. सिमिलरली पार्टनर के बारे में भी कंप्लेंट रहती है. यूजुअली मैं जो एग्जांपल देता हूँ कि सुबह सुबह पत्नी ने चाय नहीं दी हाथ में, तो कंप्लेंट शुरू हो गई, ये ऐसी है, वैसी है, बिजी है. हस्बैंड को बोला कि जाओ मार्केट से सब्जी लेके आओ, तो लेकर ही आया नहीं, भूल गया, कहीं और किसी काम में उलझ गया, तो उसके बारे में कंप्लेंट शुरू होती है ना. तो इस तरह से इसके कोई लिमिट नहीं है. मतलब पत्नी ने कैसे दिखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इससे लेकर पति ने कैसे दिखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए,
उसमें कितना पैसा कमाना चाहिए, किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, किन लोगों में रहना चाहिए, ये सारी बातें हमारी अपेक्षाएं रखती है। और वो अगर फुलफिल नहीं हो रही तो हम संतुष्ट नहीं होते, अनहैप्पीनेस रहता है। ये हमने अलग अलग रिलेशंस के बारे में देखा है। आज थोड़ा देखेंगे कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। और फिर आप काफी, मेरे यहाँ इस मीटिंग में बहुत सारे लोग सीनियर हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो आप भी अपनी तरफ से थोड़ा शेयर करें कि ये सिचुएशंस को कैसे और हैंडल किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर देशमुख ने कहा, यह केवल हमारा क्या कहेंगे उसको, मोनोलोगस नहीं है और मोनो टॉक भी नहीं है, यूनिडायरेक्शनल नहीं, आपको भी उसमें शेयर करना है। तो थोड़ा मैं जब बताता जाऊंगा तो अपने एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करते जाइए ताकि हम इस पे बात कर सकेंगे। संतोष का एक कारण या असंतुष्टि का एक कारण यह है कि हमने कुछ अपेक्षा सेट करके रखी है कि ऐसा हुआ तो मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, जैसे बच्चे ने अच्छे मार्क्स लेके आए तो मुझे आनंद होता है, या फिर पत्नी ने इस तरह से खाना बनाया तो आनंद होगा, पति ने ऐसे कुछ किया, प्रमोशन लिया, तरक्की की तो आनंद होगा। ये ऐसे अलग अलग हमारे हैप्पीनेस के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हमें लगता है कि ये करने के बाद हमें खुशी मिलेगी, इसीलिए हमने वो एक्सपेक्टेशन सेट करके रखी है। अब इसको थोड़ा ठीक से देखा जाए तो जैसे मेरी बेटी ने, अगर यूँ समझो कि 90% मार्क उसको 10th में मिले हैं, तो मुझे लगता है अरे वाह बहुत अच्छे हैं, टेम्पररी हैं। हाँ, मतलब इमोशंस टेम्पररी रहते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छे मार्क मिले हैं। लेकिन जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है तब लगता है कि नहीं, थोड़े और चाहिए थे। ठीक है, वही किसी और का बेटा है, उसको 98% मिले हैं, तो उसको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए टॉप में, वहां पे उसके लिए भी थोड़ी समस्या रहती है। उसको लगता है कि नहीं, 99 या 99.5 अगर होते हैं ना तो काम आसान हो जाता। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किसी को एडमिशन मिल गई तो उसको लगता है कि थोड़ा और होता तो कहीं और अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकता था। और जिसको कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई तो उसे लगता है कि अगर मेरे पास और परसेंटेज होते तो मैं शायद हार्वर्ड भी पहुंच जाता। है ना? ये हम जिस लेवल पे, जिस अपेक्षा पे हम कंपेयर करना चाहते हैं, उसी लेवल पे कोई और भी है, पर वो वहां पे हैप्पी है क्या, कंटेंटेड है क्या, तो शायद नहीं है। मैंने कभी पुलिस का सेशन लिया था, पुलिस के साथ कोविड के टाइम में काम किया था। वही उस टाइम बहुत पुलिस को भी बहुत टेंशन था, तो उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह लेने के लिए कुछ सेशंस ले रहा था। उस समय मैंने यही पूछा कि कितना पैसा मिला तो आप लोग खुश रहोगे, कि बस इतना मिल गया तो हो गया, नंबर्स बताइए। तो ऐसे बातें करते करते किसी ने बोल दिया, अगर मुझे 5 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ रुपीज, तो आई एम हैप्पी, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। तब मैंने कहा, तो 5 करोड़ लोग तो बहुत लोगों के पास है ऑलरेडी, क्या वो हैप्पी है, क्या वो कंटेंट है? तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हम जिस बात के पीछे भागना चाहते हैं, जो ऑलरेडी उस लेवल पे है, वह भी कंटेंट नहीं हो सकते। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे मन का स्वभाव है। हम कितना भी भागे, हमें वो हैप्पीनेस नहीं मिल सकता। अब ऐसा क्यों होता है? तो हम जो एंजॉयमेंट की अपेक्षा रखते हैं, वह दो लेवल पे है। एक है फिजिकल लेवल पे, दूसरी है इमोशनल लेवल पे, या मैं कहूंगा थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे हम बहुत कुछ एंजॉय करना चाहते हैं कि मैं खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इंटर उसमें जो लगता रहता है ना कि गुलाब जाम दो खा लिए तो भी नहीं, दिल नहीं भरा, और खाते, इस तरह का चल जाता है। तो कंटेनमेंट नहीं है। कुछ देखना है, देख के भी कंटेनमेंट नहीं रहती। सुनेंगे, गाना सुनते रहेंगे, फिर भी कंटेनमेंट नहीं होती। कुछ देर बाद फिर से चालू होता है। तो ये जो हमारा मन है, ये हमें भगाते ही रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। अच्छा, इंटरनली भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो इसका मूल कारण यह है
कि हमारा जो डिमांड करने वाली जो एंटिटी है हम में से, वो हमारे सेंसेस नहीं, वो हमारा माइंड है। और माइंड तो यूँ कहा गया है कि वो इनफाइनाइट है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। हाँ, मन की डेफिनेशन क्या है? मन किसको कहते हैं? मन उसको कहते हैं कि जो सामने दिख रहा है वो, और जो नहीं दिख रहा है वो। जहां जहां हम पहुंच जाते हैं, जहां जहां हमारी इच्छा जाती है, जहां जहां हमारा चेतना जाती है, वो सब मन में आता है। उसी को मन कहा जाता है। मन की डेफिनेशन है संकल्प जो करता है, या जो संकल्प है, हमने ये चाहा, बस वो हमारा मन हो गया। ऐसी मन की डेफिनेशन होगी। तो ये मन तो इनफाइनाइट है, कहाँ पे भी जा सकता है। कल हमारी इच्छा हो कि हाँ, मुझे इलॉन मस्क के साथ कहीं चांद पे जाना है, हो सकती है हमारी इच्छा, तो वो हमारा मन हो गया। इसको कोई लिमिट नहीं है। और इस अनलिमिटेड मन के कारण हमारी अपेक्षाएं भी अनलिमिटेड हो जाती है। जरा सोचिए, सिंपल सी बात है, अगर मैंने कहा कि मेरा 3 BHK फ्लैट होना होना चाहिए पुणे में, तो 3 BHK मिलने के बाद रुक जाऊंगा क्या? नहीं रुकूंगा। फिर कुछ 2 दिनों में ही, या जब तक वो बनता है, रेडी होता है, तब तक अपेक्षा हो जाएगी 4 BHK अगर मिल जाता, 4 BHK मिल जाता तो और अच्छा रहता। है ना? ये हमारी क्या कहूंगा, इच्छाएं ये कभी रुकती नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इसके पीछे जो कारण होता है कि हमें लगता है हमें इसमें आनंद मिलेगा, ये लगना, ये एक कारण है। दूसरा, इसमें भय भी होता है, डर भी होता है। क्यों भाई चाहिए? जो 3 BHK में क्यों चाहिए? क्यों मुझे अच्छा खाना चाहिए? क्यों मुझे ये चाहिए? तो उसके पीछे एक डर यह रहता है कि अगर मेरा जीवन समाप्त हो गया, तो ये लाइफ तो ऐसे ही गया ना, मैंने एंजॉय जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। कभी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं मेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, फिर मैं जो एंजॉय करना चाहता हूँ वो नहीं करना कर सकूंगा। है ना? ऐसा लगता है। मन, देखिए, मन कभी ये नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, शरीर हो जाता है। हम आज भी देखते हैं सीनियर एज में लोग क्राइम करते हैं। ठीक है? वही लस्ट, वही अट्रैक्शन, उसी के कारण ही सब अपराध होते रहते। क्यों? क्योंकि मन तो इनफाइनाइट है। तो उसके पहले यही डर रहता है कि अगर मरने से पहले मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये लाइफ ऐसा ही चला गया, एंजॉयमेंट ही नहीं रही। इस तरह की भावना से हम अपना लाइफ लेकर जाते हैं। अभी सच में इन सारी बातों में कितना दम है, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सपांड करते हैं। जो हमारा मन है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसको हम थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। मन और कॉन्शियसनेस अलग अलग है। मन तो कहा कहा जाए तो मन है ही नहीं, ऐसा मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में। कॉन्शियसनेस तो हमारी जो चेतना है वही है। हम अपने आप को बता सकते हैं। थोड़ा अभी प्रैक्टिकल से थोड़ा स्पिरिचुअल पे आता हूँ। स्पिरिचुअल और ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन अगर हम में से कुछ नहीं उसको मानते तो बात अलग है। अगर ये कहा जाए कि मेरा पुनर्जन्म होता है, हम काफी लोग इंडियन फिलोसॉफी में इस तरह से इस बात को मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, तो जिस बात के पीछे मैं भागना चाहता हूँ, क्या वह बात मैंने पहले नहीं की है? चाहे वो खाना है, चाहे सेक्स है, चाहे कुछ घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, सुनना है, जो कुछ भी है। हाँ, ये जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड सारी बातें हैं, हमने पहले नहीं की है। अच्छा, पहले कितनी बार की है? कितने जन्म हुए हैं, कितने जन्मों में हमने यही 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 सब किया है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वरना यहाँ पे होते ही नहीं। अच्छा, हम अगर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, तो चलो ठीक है, इस जन्म में ही सही, हमने यहाँ भी कई बार वही बातें की हैं, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा समझ में आना चाहिए कि जो सेटिस्फैक्शन हम इन चीजों में ढूंढ रहे हैं वो उसमें नहीं, उसका प्रॉब्लम हमारे अंदर है। इस हमारे अंदर के बात को अगर हम स्थिर कर दिए, सेटल कर देते हैं कि हाँ यार, ये बाहर नहीं, अंदर देखना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ इधर है, क्योंकि बार बार मांग रहा है, मिलने के बाद भी मांग रहा है। तो एक होता ना, गरीब कुछ है जो, जिसको कितना भी पैसा दिया जाए, और दो और दो और दो, और वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा है, ब्लैक होल जैसे है हम, कितना भी डालिए इसमें उसको कुछ सेटिस्फाई, तृप्ति नहीं होती। तो समझिए कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है। अब यह प्रॉब्लम क्यों है, ये आखिरी टॉपिक लेते हैं, और उसके बाद फिर थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर रुकेंगे। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है मेरे विचार से
कि हमने ये इंप्रेशन बना के रखा है कि इसमें सेटिस्फेक्शन है। ये सारा मूल उसका है। मन डिमांड करता है, मान लिया, तो हमने देखे एक एक लेवल पे अंदर अंदर जाते गए। एक लेवल पे हमने देखा कि हमारी इच्छा होती है एंजॉय करना, आंखों को लगता है, कानों को लगता है, जुबान को लगता है कुछ खाना है। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि नहीं, ये तो मन है जो डिमांड कर रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उस मन के पीछे भी यह है कि हमें थोड़ी अतृप्ति रहती है या डर रहता है। ये भी क्यों होता है? तो उसका कारण है हमारे इंप्रेशंस, है ना? जैसे कि बच्चों ने ऐसे ही करना चाहिए, ये कहीं पे डिफाइंड है क्या? मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चों ने मेरे तरफ देखना ही चाहिए, ये हमारे इंप्रेशंस हो गए। अलग अलग कल्चर में अलग अलग पद्धतियां होती हैं। कुछ जगह देखते, कुछ जगह देखते भी नहीं है। कुछ जगह सीधा ओल्ड एज होम में डाल देते, कुछ जगह अपने पास रखते हैं। अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग तरह के वातावरण होते हैं। फिर भी यहाँ पे जो हम आउट जाकर देखते हैं, बाहर जाके किसी को ब्लेम करते हैं, बाहर जाके किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसके बदले अगर हम यह देखें कि मैं कुछ हूं और मेरे जैसे ही सिचुएशन में और लोग हैं, क्या सभी लोग एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब यह है कि ये जो मैं अपेक्षा रख रहा हूं, ये मेरी तरफ से है। और मेरी अपेक्षा ऐसी क्यों है? क्योंकि मेरे इंप्रेशंस ऐसे हैं। हो सकता है कि किसी को, अपने बच्चे को, एग्जाम में 90% मार्क्स मिले, तो वो तो पूरे गांव में पेढ़ा बांट देगा, बहुत खुश रहेगा। कोई ऐसा भी होगा कि जिसको अपने बच्चे को 95 मार्क्स भी मिले तो भी वो खुश नहीं रहेगा। अब ये बच्चे के 95 मार्क्स या 90% मार्क्स, ये पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि वो तो, उसके दोनों के लिए भी आदमी की अपेक्षा तो अलग है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अपेक्षा का होता है। और अपेक्षा ऐसी क्यों है? क्योंकि हमने इंप्रेशन बना के रखा है कि ऐसा हुआ तो मैं खुश रहूंगा, वैसा रहा तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, कंटेंट रहूंगा। मेरे बीवी ने मुझे सुबह चाय दी तो मैं कंटेंट रहूंगा, नहीं दी तो दुखी रहूंगा। हाँ, इस तरह के हमारे एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? तो संस्कार तो हम देखते हैं अलग अलग कारणों से होते हैं। हमने, हमारे जो इम्प्रेशंस है वो हमारे जीन्स में आते हैं, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। वही इम्प्रेशंस हम डेवलप करते जाते हैं जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं। उसके बाद जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, जो हम बातें पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, ये सारी बातें मिला के हमें हमारा इम्प्रेशन बनाते हैं। तो एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि हम नहीं हैं। हम तो ये सारे बाहर के लोगों ने बनाया हुआ कुछ तो एक मिश्रण है जो बाहर रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, वो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ही नहीं। वो तो ये सब जो हमने देखा है उसी का एक्सप्रेशन होता है। तो थोड़ा इनवर्ड भी जाए और देखे कि मेरा ओरिजिनल रूप क्या था। जब मैंने जन्म लिया था तो क्या मैं ऐसे ही सब लेके आया था? कुछ तो होगा सूक्ष्म रूप से, लेकिन बाकी का वो तो हमने सब डेवलप किया। तो अपनी जो स्लेट है, पार्टी है, उसको पूरा वाइप आउट कर दे, क्लीन कर दे। जो भी हमारी आयु है, जो भी हम है, उस समय अपने आप को क्लीन कर दे कि देखे यह मैं नहीं हूं। जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो ऐसे ही होनी चाहिए, यह भी डिफाइन किया जाता है। एक रिसेंटली जो रात को अभी भारत के टाइम से जो वशिष्ठ के सेशन ले रहे हैं, तो उसमें ऐसी बातें करते करते किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम तो इंसान हैं, मनुष्य है, हमारी इमोशंस रहेगी। जैसे किसी की डेथ हो गई, एकदम ही करीबी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, तो वहां पे जाए तो क्या रोए नहीं? क्या हमें दुख नहीं होना चाहिए? इमोशंस तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हम तो एक्सप्रेस होना चाहिए, इमोशंस तो होनी चाहिए। तो इसका उत्तर मैंने तो यही दिया कि इमोशंस भी हमारी आवश्यक नहीं है। व्यवहार के लिए, लोगों में रहने के लिए, जो बाहर का जीवन है उसमें रहने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसी की डेथ हो गई, जाके वहां पे आप नाचते गाते तो नहीं जा सकते, आपको मुंह लटका के ही जाना पड़ेगा, दुख ऐसा दिखाना पड़ेगा। बट अंदर में टच करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोज कोई ना कोई, किसी ना किसी की डेथ होती ही है। तो ये जो इमोशंस होने चाहिए, ये ऐसा होने के बाद वैसा होना चाहिए, ये जो डेफिनेशन हमने बना के रखे, इसको ही पूरा स्क्रैप कर दे। ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। ये इंसान को इमोशंस होनी चाहिए, हम मानते हैं,
लेकिन अच्छा, आती है तो फिर गलत है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम अभी तो पहुंचे भी नहीं होंगे उस लेवल तक। पर ये जर्नी कभी ना कभी शुरू करना चाहिए कि अपने आप को देखें, ये जो भी मेरा बिहेवियर है, जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, क्या ये आवश्यक है? क्या ये सभी लोग इसी सिचुएशन में इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं? अगर नहीं है तो अपने आप को देखें, और वही हमारे संस्कार, हमारे कंटेंटमेंट को लेकर आएंगे कि जो भी है अच्छा ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा है, चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अपने बिजनेस में, जॉब में कंटेंट रहे और तरक्की ही ना करे। हाँ, कंटेनमेंट रख के हमें आगे बढ़ना है, आगे प्रोग्रेस करना है। नहीं तो फिर जैसे हस्बैंड है, शराबी है, रोज दारू पी के आता है, तो ठीक है, कंटेंट है, क्या ऐसे ही करके बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं। हाँ, उसको झगड़ा भी नहीं करना है, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा है, लेकिन इसको चेंज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करें। पढ़ाई में हमें 50% मार्क मिल रहे हैं, 60% मार्क मिल रहे हैं, तो इस बात को लेकर के हाँ कंटेंट है, जो भी है, खुश है, ईश्वर ने दिया है, ऐसा करके नहीं बैठना है। हम अपने आप को और आगे लेकर जा सकते हैं, पर कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है की बातें अगर करते गए ना, तो नहीं का फैक्टर बढ़ते जाता है। उसके बदले पॉजिटिव लैंग्वेज लेकर आ सकते हैं हम लोग। हाँ, मेरे पास ये है, ठीक है, इसको थोड़ा और सुधार सकते हैं। जैसे बच्चों के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, या इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो नहीं, नहीं है कि नहीं, ठीक है, ऐसा ऐसा है, इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो पॉजिटिविटी हम बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपके विचार सुनना चाहूंगा। आप तो यहाँ पे काफी लोग सीनियर हैं, सेटिस्फेक्शन कंटेनमेंट क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। कुछ आप भी शेयर करिए, अगर कुछ इसमें क्वेश्चंस है तो वो भी हम देख लेते हैं। डॉक्टर सचिन, आपको भी कुछ ऐड करना है या किसी को और ऐड करना है तो प्लीज कर सकते हैं। तो इसमें एक जो पुरानी स्टोरी है कि एक मुनि ने उनकी दो पत्नियां थी उनको बुलाया और दोनों को बोला कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू इफ आई एम नॉट देयर, तो व्हाट कैन आई प्रोवाइड यू। सो वन ऑफ द वाइफ सेड कि दिस इज सिंपल क्वेश्चन, I need big house, I need ornaments, I need money, I need people to help me, I need cattle, animals, this, that, and then I will be all well taken care of. You don't have to worry. The second one said, I don't need any of that. Give me something which will not perish, something which will not perish. That will what I really need in your absence. So most of the things what Yatin was saying or what we go through and we think and ask for are mostly perishables. Perishables means like my grandfather told me when I was very young that uh, print a currency which you can use into the next life. I will provide you for this one, but what will be the next life will entitled. So obviously the selflessness, service oriented attitude. There are many beautiful ideas how you can implement. But most of the times, these ideas they remain in our head. They don't become the practice. सबके दिल में वही light है जो everybody has. But then why only few people become saint? Why only few people start something meaningful which will help many, many people? And our ICC is one of the good example of beautiful community coming together with a mission, unite, serve, and celebrate, rather than looking at what divides us, finding the common thread, create a mission to serve, support each other, and also come together and celebrate beautiful outcomes of being together. So, what is the difference between there are words, right? Satisfaction, happiness, contentment. So, these are the layers of
outcomes, right? So you can share and maybe share your wisdom coming from the senior on, because lot of my knowledge is based on other people's experiences. But you already experienced twice as older, so you can share your insight कि what is not perishable in your life. बहुत जो perishable था वो तो perish हो गया. But what is your treasure? How will you cherish it? And how will you share it with others also? And which wife are you? The first one or the second one? So I will just open it for the discussion. So In my maybe, opinion, yeah. the satisfaction part is all mental. If you think in your mind that you are satisfied, whether Mm. you have things or not, you are satisfied. If you think no matter how many millions of dollars you have or how many facilities you have, you think, oh, you are not satisfied. You are not satisfied. I think in my mind, I think, oh, I don't have this thing. I am satisfied. If I don't have anything, so what? But I'm satisfied. So I That, think that's very good. But then let's it's raise the question that why we have to define the level of satisfaction in different meaning and different words. एक ही वर्ड क्यों नहीं है कि मैं सुखी हूँ, तो कितना सुखी वो भी बताना पड़ता है, उसकी लेयर्स आते हैं, है ना? अब ये लेयर्स तो आपके ऊपर है कि आप कितना सेटिस्फाइड फील करना चाहते हैं. दैट्स व्हाट लेयर्स कम्स इनटू. राइट, बट दैट ब्रिंग्स अस टू द सेम पॉइंट कि जो अगर जैसे सुधा, यू लाइक समथिंग एंड किसी ने आपको अच्छा दिया जो तुमको चाहिए था, भी पेट भर गया, फिर भी मन नहीं भरा और खाना चाहते हैं, पर पेट तो बोलता है कि नहीं बस हो गया. सो यू फील अनहैप्पी बिकॉज यू कैन डू. हाँ, मैं 40 years का था तो और 10 तो आराम से खा सकता था, लाइक दोज आर द थिंग्स कम. बट That comes, see, that's what I'm saying. It's all in your mind. If I think, I mean, I like this sometimes, I ate two or three or something, and then I said, okay, no more. But I yeah, wanted got to the eat point. more. No, because Yeah, understood, understood. Let's see what Radha want to share. Go ahead, Radha. Hi, good evening. Good morning, Dr. Yateen. Nice to see. I don't know much about you because I haven't attended previous things, but from the way you spoke, it was very, very interesting. And talking about contentment, it also grows. As we grow older, our stages. We have stages in life. It's not like we straight away become wise. So when we were young, we are motivated by our parents to achieve and to learn and to understand the world around us. That's so important. So maybe it's because of the system, which English system of learning mathematics, it's all been divided. But earlier, if we go to look at our history, we learned from Gurukul. We would go and we learned things around us, the world around us. And the chit, our chit, that is consciousness, and the achit, which is that external reality, which is so beautiful. We realize that, and then we think, then we understand, oh my god, it's so mathematical, it is so beautiful, and we learn that there is a stage. And then we made. Warren Buffett said that the most important decision, you guys, when they asked, a group of young students asked him that what is how can we achieve a lot in life. He said, now you are at an age where you have to get the best partner in your life, and you have to choose a good partner, whether it's a business partner or whether it's a life partner. That's the most important. You're in that stage of life. Later, once that is settled, then you will be able to achieve a lot. So likewise, that's another stage. And after that, so what I'm trying to tell you, from my very limited experience compared to you people, I don't know much, but from my perspective, as we grow older, we become more understanding, and we learn to accept.
We learn to accept what is in our share. That's because of our nature, of our experience, of our ability, and our skills. Many things going together, hand in hand, and then we achieve a certain stability and a certain understanding of our life around us. And then, even then, it's up to us whether we want to be content or we don't need to be content. But I think that having a lot of friends and not worrying about too much about your personal achievement, all that doesn't matter after a certain time. What really matters is to know that we have a life, this wonderful life, where God has given so many beautiful things in this world. Why not we, our chit, and why can't we understand that achit, and then get anand out of it, which is what is Sachit Anand, like that's a basic philosophy, as you said, spirituality and all that. So I have a feeling that we should try to move towards that rather than be shackled by, कि ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, and we are not invited for Thanksgiving and stuff like that, because in our culture we are always with our parents or children, and it's every day is a Thanksgiving day for us. So if we can come to terms and if we can accept, then I think that we've done a good job for ourselves. We can be peaceful rather than all the time hanker for something which is never going to be ours, because that's what it is. Life is like that. We got to accept that. So acceptance is very important. For me, contentment is equal to also acceptance of what's on our plate, what God has served. Mhm. Yeah. And also the karma, past karma. We don't know what we have done, and we have achieved, because I believe in karma. So I feel that this is what I deserve and this is what I've got. I'm so glad that at least I'm born as a human being and I have got the wonderful opportunity of learning English, Hindi, Sanskrit, and know all these things. I'm more than happy. I'm more than happy. Thank you Great. so much. Great. Mm, Essentially go inwards, right? Instead of going mm. extrovert, that you're outward. Yes. What you Yes. Yeah, I said, till think because achieve, yeah. Radhaji is a teacher, I think he brought it to a very good point that the acceptance is contentment in the way, Mm, uh, so that and the karma, our actions bring you to the what situation we are in. The now whatever you believe on the current or the past or whatever way we look at it, it's mm, a cumulative sanchit karma. And the question comes like once we accept it and we made peace with it, um, still there can be discontentment inside because you still want things to go in certain way, but they didn't, though you accepted it, right? So there is that Vishad. So the main part into this, why we brought this to as a discussion, because lot of things can be accomplished. So one of the main part into this, the Vedic teachings teaches us that when we learn from other people's experiences early on, then we can conquer a lot of situations ourselves, mm, right? Because somebody else had gone through few thousand years ago. Now, when I did the cross study over the mentality of the people over a period of the time, and it comes back the happiness or the sadness. These are the two, bad or evil, right? And the good or evil, we can say. So it's persistent. So now, when we know what happiness means, I know I want to choose happiness over the sadness or negativity. Why I'm still not there, if I can define it, and what will make me into that, right? There was this movie made by some students, it's called as Happy, and they went in different areas into the world to find happy people and see the cause of their happiness. And it's so simple that it actually starts with somebody in Calcutta who don't even have a home, living under the tarp.
but who starts his day by giving 5 rupees to somebody. Now it's hard-earned money and it's raining, and they may not even make any money that day because nobody's going out. But still, they believe that's the cause and their thing. Now everybody can have those mission. Then when we look at, many of us are more privileged than anybody. We don't have to walk 5 miles to get a bucket of water. We open the tap, and so we start forgetting a lot of privileges which can be available to us. That's one angle. I don't want to reach a conclusion. I'm just want to challenge your minds as seniors that what's a formula? Not making peace with things, but what's the most ideal way to reach with what you know from life experience and from what has been described? And why, as a human being, we are not either able to or not willing to reach that perfection of happiness and contentment? What are the possible obstacles? What are the lack of resources? Why there is that kind of lethargy to make it happen? It's our own creation, like you said, right, Radhaji? Yeah. That Satanji, can I say something? yeah, one by one, let's go. I think Rajeshwari had her hand up. Rajeshwari, you want to go first? Sure. Um, Namaskar and Jai Shri Krishna. जैसे So, our Hello. expectation is the main reason. And the another thing that we don't have satisfaction what we have. So, slowly, as Radhaben said, that according to our age, like in a childhood, if you give a child uh, toy and 100 rupees, he will select a toy. He will not touch the 100 rupees because he don't know what is 100 rupees. He can have 100 of those from there. It's the same way when we get older, like we are looking for some good job or some good life partner like that. So, and as we go older and seniors, then we slowly learn something and we become wise and we some reading and some of the adhyatmic thing. Like in Gita Ji, they says, when you have a 1 bedroom, you want a 3 bedroom apartment. When you have a bicycle, you want a Luna. When you have Luna, you want scooter. When you have scooter, you will expect car. When you have car, you will expect like BMW and whatnot. But your expectation is never ending. You always want more, 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 more. That is a lust. लोभ लोभ कहते हैं ना, तो वही हमारा कहीं रुकता नहीं है. We have to put somewhere the full stop, that I have enough and find the satisfaction that God has given me a lot. Look at the down that who people like just now Sachin Bhai said that look, people has to go for water miles away and get 1 bucket of water. Here we just open the tap and we just let it go 10 buckets of water just like that. So we don't count on, we don't care for, and we have car. So we are moving in car. Some people has to walk 5 miles. So we don't think about that. So find a satisfaction and feel like I have everything. And after having everything, think about what I can give. Giving is the great thing. When you have whatever extra, give it away. And find that when you give, what a great satisfaction you have. So, and that is what Sachin Bhai says, what we can take to next generation, next birth. That is what our good work, good karma, like living for others, paropkare jivu. So whatever you do for others, that is what you can carry forward in next birth. This is what I think little bit. I don't know much about, but one more thing I would like to know. 2 lines I will sing. मन मरे माया मरे मर मर जात शरीर आशा तृष्णा ना मरे
कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। हम कितनी बार सोच लेते मेरे पास इनफ है, इनफ है, तब भी मन कभी खुद का लगाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें चाहिए चाहिए चाहिए। तो ऐसा इच्छा होगा, ऐसा होता है, वो कभी पूर्ण नहीं होती, खत्म नहीं होती, आगे ही बढ़ती रहती है। So we need to try to satisfy ourselves and feel like we are happy, we have everything and enough. Yeah, thank you. Thank That's you. well. Yeah. So I want to continue this thread a little bit and then Can I say something? just a minute before I forget. The main part, what she bought, is very interesting. That long time ago, the demons and the Asura and Sura had the argument, and the theme came that when the baby is born, it says da 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 da, right? That's the word. And daya, daman, danam, uh, compassion, and the daman means removal of the darkness, and danam means giving, and giving also to deserving means giving people what they want, not what we think they need, right? That's also important. So in the theme, what we call it, do means give me, like Rajeshwari Bhatt. And do, when I do the hand other way, means give also. So though if my eyes are closed, it doesn't mean the difference is not understood. But when my eyes are open, though means give to me or give it to I want to give. Right? That's how it means. The words are the same. So the desire to get more is for a long time, thousands of years we have that. So Vedanta teaches us that convert that desire is not going to go away, wanting more. But that wanting more should change from matter to the energy, to the you want more knowledge, you want more wisdom. Knowledge become wisdom only by the experience. Now, when you reach that age, senior, like Radhaji is saying, the Vanaprastha ashram, you already have lot of different. She says she haven't yet reached Vanaprastha. But anyway, so the goal is into this context. Unless we have the discussions, it doesn't trigger in our minds like where we are at, where we want to go, what is right, what is not so good, what might be the resources, because we are from the culture which has given landmark guidelines on how to work through this. I will give it back to our speaker. Go ahead, Yateen. Yeah, I think Oh, uh, sorry, 1 minute, 1 minute before you go, the two people wanted to say something Can and I then, say something, yeah, Sachin? quick, you go ahead, please. Yeah. Yeah. I'm asking advice actually. We do expect the old age, we expect our children should do this, children should do that. My children are very nice, they care, they grew up in America. There was no Indian children in the school, they don't have Indian culture. Now they have, but they don't understand me and I don't understand them. They want independence and they care for me, but they don't understand how to take care. So that is my, and I expect like my mind is Indian inside me. I expect that. So when I'm not well, they'll call 2, 3 times how I am and all that. But they forget, Mom, do we have food? Is there anything for you to eat? They don't do purposely. They are innocently they do these things. So and I expect that, and I live alone. So it is sometimes I don't understand what to do, and I that's my problem. so drop these expectations. I told, right? Why should those expectations be in a certain fashion? Like an American mom, she wouldn't even expect this. That Yeah, yeah. typically, huh? She may not even expect No, I because have friends and
They don't expect anything from their children. And I did that to all my life, but now I'm like that. I don't know what happened. Exactly. Because you are an Indian and you were probably brought up in an environment where it is these sanskars, these are the impressions that are created in you on your mind that this is how it should happen. Correct. And but somewhere else, these are not the impressions that are created. So again, is it right? It is subjective. So something which is subjective, something which is subjective for American and something which is subjective for an Indian, okay, it is changing. It is not something which is constant. So what is constant in you as your soul, as your own, which is clean, okay? From that level you expect, that level you see what is right. Then it will tell you, okay, this is the situation, be content with that and try to accept it. Okay, there is nothing to blame, and I'm sure you are not blaming. That is what I No, can no, read my from you. children are very But care. They care more than Can I anybody say else. only a couple of minutes? Understand. I can Yeah. say something, please. yeah, yeah, we Okay, have time. We have time. okay. Sorry about that, but I just want to say, be friends with yourself and don't expect from other people. You're right. If you're healthy, you can help other people. If you're not miserable. And other thing, you have to have the rope from God. Believe in that. Who gave you the birth? He provided everything for you. Let the body in hand to Him, and you will, wherever you go, you will be safe. He is always walking with you wherever you go because you are believing that. You don't believe you give the birth to the children, they have to come and serve you. No, whatever you believe, He gave you the birth. He provides everything. In India, we the water from outside. Here, you don't have to bring any things you can make it. Water is there. Everything is, the facility is there. You know, you have to be happy yourself, you know, and you don't have to be, when the expectation comes, that's the time you are in a miserable. You make you miserable yourself. Don't expect. Do what you can. If you can't do it, then ask Bhagwan. He will create the situation. He will send somebody. That's what I believe in. That's the way I live. Thank Correct. you so much. Yeah, thank you. To Thank you. Hello, Dr. Yateen. By the same token, if everybody becomes very satisfied, how will the research go on new innovations or new medicines and all the science will advance? Right. So often, contentment is confused with lethargy or dullness or laziness. Okay, it's not that. Huh? In action, we have to be performing the supreme. But within, at the heart, we have to be content. Knowing that whatever I am doing, even a researcher also has to know that whatever he is doing, he probably may not see the results um, during his life. Like lot of research, they are carried one after another, and then somebody else sees the results. So this has to be understood. Otherwise, people just in that become feverish, become competitive, and there is that uh, greed, okay, and which from which the various crimes also come up. In research, also we have seen people are in so much of hurry in the research to find out something, just to make sure that they earn money out of it. So the underlying fact is giving. That is what we have just discussed. Okay, we want to give something, we want to do something. I'll tell you an example.
Like I was discussing a person with a person who was who had done something like me, who quit the job and then got into spirituality and started giving lectures on Yoga Vasishtha. So I'm giving on that. He did something else. He shared that in USA, one guy was with Microsoft and he earned a lot of money. And after earning a lot of money at a very young age, he decided to retire. He said, "Okay, now there is nothing to do. I have got so much that my life will just I can carry it through." So he quit the job, and then what he used to do was he would take his child, drop to the school, and then go to the bar uh, and or maybe pub, and then kept drinking, have chit chat, go here, there, etc., etc. Come back, take the child back home in the evening, again go in the evening somewhere, and then just pass the time. Now that is not being contented, at least from my point of view. Okay, contentment is not lethargy. It is not dullness, laziness. You are content. Like I was happy with my job. I was contented. I said, okay, enough of money. Now I want to do something for my passion for the society and all. So that other aspect should also be there. Being happy, being content, then what? After that, what? So you have to know that because this body is there, it is gifted by the God, this body must do something the best that it can do. So what is the use of this body, this knowledge, whatever I have acquired so far? Let me take the best out of it and give it to the society. Okay, why even at a spiritual level, even that giving is also not an aspect there. It is okay because this body cannot sit idle, let it do something and let it do the best possible it can do, make the best use of this body. That is all. बट वो ना हम भूल जाते हैं कंटेनमेंट कहे तो बस आराम से बैठ जाएंगे अब कुछ करना नहीं है ऐसा नहीं है हमें उसके ऊपर और ज्यादा बिजी हो जाना है जो कंटेंट होता है सच में वो सच में बहुत ज्यादा बिजी होता है और जो जिसने उसको मिसअंडरस्टैंड किया है वो तो लेजी होकर बैठ जाएगा इज नॉट कंटेंट बिकॉज इवन दैट डिजायर टू सिट आइडल अभी बस हो गया ये जो डिजायर है ना यह भी कंटेंटमेंट नहीं है ओके देयर इज स्टिल अ डिजायर वी आर नाउ निगेटिंग कि हाँ मैंने बहुत कर लिया उसको रोक देना है तो दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ कंटेनमेंट हम रुक जाते हैं तो भी एक डिजायर हो गया कि मुझे शांत बैठना है कुछ नहीं करना है यह भी डिजायर है आई होप आई ट्राई टू एड्रेस दैट Thank you. What about to suppose we have there are people, sportsmen especially, they will extreme fatigue, they will play and then they will lose also, but at the end of it they would have enjoyed their life and there's a lot of contentment in them. They have wasted so much of energy and they have lost the game, but still they are so happy and they are very content. So these are two different things, that inner engineering or whatever Sadhguru calls it. I don't know, I haven't attended his lecture so far, but there is a kind of an inner engineering that goes on and we people build we move towards total contentment, not in the worldly things, giving and helping out others. These are all byproducts of our contentment, and ultimately we ourselves in the purest form, we feel quiet, at peace with the world. We are very quiet and we are inside, we are not quite outside, we may be chattering, but inside we are deeply the contentment has touched our soul, kind of a thing. It's very wrong on my part to say all these things, but I feel it, but I don't know how to express it in the spiritual words. I yeah honestly feel very happy at times, and I feel very happy that I'm born in this world as a human being. So I feel at those times I'm the most content. yeah just look at the seers like all those great people Shankaracharya for example right wasn't he content he was but then did he quit everything was he sitting idle no he went all over India and established those four mathas, right? Yes, He did yes, you're everything. right. So even Lord Ram, he was content. Lord Krishna was content. Lord Buddha was content. All these Mm. people, they had satisfaction, but then they didn't sit idle. They kept on doing their duties to the fullest.
So that is what we have to learn. Anytime there is a confusion, any question, just look at these peers, okay, these knowledgeable ones. Answers will be like this. Okay, forget everything. They have done it. That is what the role models are, right? तो उनको फॉलो करते हैं हम लोग, बहुत आसान हो जाता है. Yateen ji, what is your take on contentment? What is your core belief in contentment? Well, I said so much अब अभी उसके बारे में. Yeah, Content. you said a lot. You said a हाँ. lot. यतीन जी ठीक कह रहे हैं कि कंटेंटमेंट तो ठीक है, लेकिन लर्निंग जो है ना, लर्निंग भी एक चीज है. अगर हम सिर्फ कंटेंटमेंट होकर बाहर जाए तो हम लर्न नहीं कुछ कर सकते. दुनिया की इतनी नॉलेज है सारी, जो क्यूरियोसिटी की वजह से और लर्निंग की वजह से है. आज ही मेरी बेटी का फोन आया, कहती मम्मी शी इज लाइक अर्ली 40s, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके अभी. कहते मेरा मन कर, उसने 2 मास्टर की हुई ऑलरेडी, अच्छी जॉब है. कहते मेरा मन करता है मैं अपना कोई और क्लास ज्वाइन करूँ. क्या ज्वाइन करोगी? साइकोलॉजी. मैंने कहा अगर टाइम है तुम्हारे पास, एनर्जी है तो करो. तो आई मीन कि भाई ये भी एक इच्छा होती है कि मैं लर्न करूँ और लर्न करूँ. वो मैनेज कर लेते हैं, बच्चों को भी कर लेते हैं, जॉब को भी कर लेते हैं. मैं कहती हूँ आजकल के बच्चों की मैनेजमेंट फोकस बहुत अच्छा है, हमारे से बहुत आगे हैं वो, हम तो बहुत पीछे हैं. मैं शोभना की बात से भी सहमत हूँ कि भाई उनकी मजबूरी है, वो फिजिकली उनको तकलीफें हैं. अब उनके पास वो एक तरह से थोड़ी सी लाचार भी हैं. अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे मेरी करें. तो अब बच्चे अपनी दुनिया में रह रहे हैं, तो उनके लिए ये है सजेशन कि वो किसी और की हेल्प ले लें, किसी फ्रेंड की ले लें, कैसे भी करें. सोचे कि मैंने खुद ही मैनेज करना है. अब बच्चों को क्या छेड़ना, जो करते हैं ठीक है, किसी से कोई जबरदस्ती थोड़ा ही है. जी ऐसा करते ठीक है, ना करे तो ठीक है. हमारे बच्चे हैं. आज ही मेरी बेटी आई लॉन्ड्री, मैंने कहा बेटा ना भी आती कोई बात नहीं, सैटरडे तक. नहीं मम्मी मैं इधर से जा रही थी, मैं सोचा चलो लॉन्ड्री. तो मैं कहती हूँ बच्चे जितना कर दें उतना ठीक है, ना करे तो ठीक है. पर ये भी है कि जब आदमी फिजिकली, वो आदमी अगर फिजिकली कोई तकलीफ होती है ना किसी को, तो वो आदमी थोड़ा हेल्पलेस भी हो जाता है, वीक भी हो जाता है. तो उसकी मैं पोजीशन समझती हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ. तो सब ठीक है. दूसरा ये है ना, अब हमारा टाइम और था. हमारे टाइम में खास करके मेरे अपना परिवार में मेरे हस्बैंड बिल्कुल शरण कुमार थे. वो हमें अपने बच्चों को बाद में प्रेफर करते थे, अपने पेरेंट्स को, अपनी बहनों को ज़्यादा पहले प्रेफर करते थे. तो ठीक है, वो टाइम अलग था, आज टाइम अलग है. आज हमारा बेटा है, वो हमसे दूर रह रहा है. तो कई बार ठीक है, अपनी बेटी है उनकी, मैं कहती हूँ ठीक है, उनका अपना परिवार है, क्या फर्क पड़ता है. सो टाइम के साथ एडजस्ट करना, हर हालात को एक्सेप्ट करना, हर हाल में खुश रहना, और अपना हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड वो बनाए रखना, और लर्न करते रहना. लर्निंग कोई बुरी चीज नहीं है. लर्निंग इज ए प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जब तक सीखते हो सीखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो. यतीन जी की बात, अब ये बड़े यतीन जी हों, सचिन जी हों, मैं कहती हूँ ये बड़ी आइडियल लाइफ जी रहे हैं. अब समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं. मैं आज सोच रही थी अरे भाई तूने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ कर ले यार, किसी को कुछ दे दे. अच्छा मैं क्या करूँ, फिर सोचूं क्या करूँ. अच्छा मेरी पड़ोसन है ना, वो थी, वो वाकर से चलती है, कहीं जाती नहीं. मेरी बेटी के घर गैदरिंग है, मैं उसको सोचूंगी उसको भी साथ ले आऊं. वो खुश हो जाएगी. अरे भाई किसी को कुछ खुशी देने की सोचो. अब हम तो बहुत, हमारी भी ऐसी पोजीशन है कि हम कुछ नहीं दे रहे किसी को, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं. खुश रह रहे हैं तो अपने लिए रह रहे हैं. तो कई बार मैं सोचूं कि अरे कुछ दूसरे के लिए भी सोचा कर, कुछ किया कर. तो छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं. पड़ोस में कोई ओल्ड है या तो उसको कुछ खिला दिया, किसी को हेल्प कर दिया, किसी को हक कर दिया. छोटी छोटी चीजें हैं हमारे लिए. बड़े काम तो आप जैसे बड़े लोग कर सकते हैं. I want to सो say मैं तो सबकी बातों से सहमत Manju हूँ. ji, Manju ji, राधा you जी की wanted to बात say भी ऐसी something. है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारे अंदर. सबकी बातें ठीक है, बस अपना खुश रहो, जितना कर सकते हैं करते जाओ. समाज को कुछ खुशी दे सकते हैं दो, कुछ दे सकते हैं दो. बाकी गिविंग एटीट्यूड रखो. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. सबको हैप्पी थैंक्सगिविंग. Manju ji wanted something. एक मेरे पास कोट आया है.
तो वो है मेरे हाथ में हैप्पीनेस पे, तो वो मैं पढ़ना चाहूंगी। तो सबको नमस्ते मेरी। और ये कोट कहता है कि जज नथिंग, you will be happy. Judge nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. And love everything, you will be happiest. Yeah. सुंदर, That's Good. it. बहुत सुंदर। That's it. So happiness is, according to me, happiness is from within, and your connection with the people. So it is totally depend upon you that with what kind of people you are connected. There are some who are energy vampires and some who are energy givers, and they will give you happiness too. So that's what I think. That's very nice. किरण जी Kiran कुछ कहना want to चाहते say 1 minute. Kiran ji want to say something. Go ahead. सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। मैं ये कहूंगी कि एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब हम अमेरिका आने वाले थे तो मेरे भाई ने स्पॉन्सर करा, तो उसने कहा कि देखो भैया, इंडिया में तो आप इंजीनियर हो, इतने बड़े नौकर चाकर होते हैं, क्या आप हार्ड वर्क कर लोगे? अमेरिका में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते क्यों नहीं करेंगे, पैसे आएंगे तो जरूर करेंगे। तो ठीक है, पहुंच गए अमेरिका, जिंदाबाद। भाई ने कोशिश करके जॉब करवा दी। तो मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं आ रहा था अमेरिका, तो बार बार यही कहते, मैं ना 100,000 बना लूंगा तो मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा। मैं 100,000 बना लूं तो मैं उसी में खुश हूँ, मैं वापस चला जाऊँ। तो सब मेरा भाई हंसता था कि 2-4 साल बीत गए, अब दीवान साहब बताओ, 100,000 तो बन गए, तो अब वापस जाना है। तो वो वापस कहाँ जाना था, वो तो बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। स्कूल से कॉलेज पहुंच के, कॉलेज से शादियां होनी थी, तो कहाँ रुकावट अपने को रोक नहीं सकता था। एक कहानी है, एक मोची बैठा था पेड़ की छांव में और अपने जूते तैयार करता था, लोगों के ठीक करता था, पतेवे वगैरह बनाता था। एक सेठ आया, उसने कहा तो इतनी गर्मी में इस पेड़ के नीचे बैठा है, तो तू ऐसे कर, तो ये क्यों ये छोटे छोटे काम करके कितना पैसा बना लेते हो? अरे भैया कुछ और करो। तो कहता मेहनत तो कर रहा हूँ। वो कहता मेहनत नहीं, ऐसे करो कि शू शू फैक्ट्री की से जाके ऑर्डर लो, फिर अपना शोरूम खोलो और देखो तुम कितने पैसे बनाओगे। बढ़ता 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 तुम्हारा तो नाम हो जाएगा कि वो फलाने मोची साहब की दुकान, शोरूम है इतना बड़ा। तो कहता है तो फिर क्या होगा? वो पूछता है उससे। वो कहता है कि बहुत खुश हो गया, पैसा आएगा। तो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी खुश हूँ, छाए में बैठा हूँ, ना किसी का देना ना लेना, मैं मजे में हूँ, खूब अपनी मस्ती से खाता पीता हूँ, मन हो तो काम करता हूँ, मन नहीं करता तो नहीं करता। तो ये सेटिस्फेक्शन जो है ना, बहुत जरूरी है। तो वो मेरे हस्बैंड के बीच में आ गया, उनको वो कहते हैं सेटिस्फाइड रहो कि ऐसा ना, हाँ भगवान से मांगो, ये मांगो कि मेरे को काम दो और मैं उसमें काम में मगन रहूं, सक्सेसफुल रहूं, और मेरे को पैसा आएगा ही आएगा। अगर अच्छी तरह काम करोगे, निश्चय करोगे, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। भगवान सब देखता है, हार्ड वर्क करने वाले को हमेशा पे मिलता है। देर है सवेर, दूर देर हो जाती है पर सवेर जरूर आती है। एंड सेटिस्फेक्शन, मन की कामना, अपनी इच्छाओं को मार के, जरूरी नहीं है इच्छाओं को मारना, इच्छा इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी छोटी भी हो सकती है। तो छोटी से शुरू करो, भगवान जरूर तुम्हारी तमन्ना पूरी करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। Yateen, we Reading spiritual thing in the morning
It helps me a lot actually. God is taking care of you, higher power is there, and how to do the day, looking ahead. I read, I have a book, an everyday's message. I read, it is spiritual and also higher power, and it helps me that I started now. Really helping me reading that thing. And also, I put mantras in the morning. I was not doing that. Now, I as think I get up, I I do. think it is a great discussion. Our time is up, but the bigger part is it's a very good. Everybody shared amazing things, and we know that one shirt doesn't fit all. Everybody has their ways to work with it. But coming to the common ground, we have a very wonderful message from the eastern side that sarve jana sukhino bhavanti, sarve santu niramaya. That means may we wish every day that nobody should go through suffering, negative experiences, and everybody should be happy and get what they need and deserve. So let's bring it to the closure with that insight, and we can continue the theme. And Yatinji will come back with more ideas, and you also share a lot of your wisdom because you already have experienced so many things and amazing stories shared by Kiranji and Geeta and uh, so many people all together. Anybody missed will be able to catch up into the next one. And thank you so much. Anything you want to add, Vijayji or Yatinji, please go ahead. We'll give a Let chance to Vijay. Yeah. Yatinji, you say something and then we'll No, no, conclude. I said I will give a chance to Vijay ji and then maybe I'll conclude. No, I don't want to share because a lot of people have shared already on this subject. Okay, Only okay. one thing I would want to share, going back many, many years ago, me and my one of my senior relative were walking in a village, old village, uh, and while we see that it was in the afternoon, there was a farmer who was uh, resting and under the tree, and my uncle, he said that, look at this uh, simple, and he's just has he can sleep even under the tree without anything, no gaddi, nothing, no cushion. He can sleep just like this. He's sleeping, and it is hot day, just under the sun. He's sleeping. He's so happy. Um, and at that time, little did I know about any of the things that we just talked about. I told him that he is resting because probably he is tired. He has worked so hard in the morning in the sun. He must have eaten something. Then he is resting. And you may think that he is so happy. Happiness is all relative. And we think that he is happy because we are not happy. It's all in our minds. Because he is happy because he's able to rest. And that's what the happiness is. So there's so many discussions went on with that short discussion. But anyway, we can go on. Thank you so much for everybody's contribution. So it's so lovely to hear everybody's viewpoint about this. But one thing I want to say that we have gone through a life cycle, ups and downs, and from younger age to this current age that we live in, and we have passed through so many. And what we desire now is different than what we desired as a kid. What we wanted was just a simple thing that is to make something from the paper, and we just throw it and it flies, and we have a competition. Mine has to go further than my friend. Those were the things, those were the desires. But the desires take place as we grow older, and needs become, and also it is the social expectations that we try to meet or overshoot, and comparison with somebody else.
that has been our lives throughout, to some extent, for some more than less to others. Anyway, thank you so much for giving me this 2 minutes of my sharing Thank, my thoughts. thank you. So, just to avoid any confusion, always remember there is a very thin line between contentment and laziness, okay, or dullness or lethargy. So, when we say I'm content, ensure that we are really content and it is not driven out of lethargy or laziness or any negativity. A great performer, in my opinion, is really content. Okay, then only he can perform something really great because at the heart of him, there is no desire, there is no feverishness. Then he can definitely do something which is really meaningful and better. If there is a desire, there is some feverishness, then he may get driven into various directions. Okay, कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और भागता रहेगा, बट गोल तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती है. So great people, they are content within, but in action they are really doing a lot of things. So वो देखें, always have that line, remember that line. Content हूँ तो सच में laziness है या it is really contentment and now I want to do something different. I think I will conclude here. Thank you so much. It is Thank you always so a much. pleasure to be here in the morning and discuss with you folks. बहुत अच्छा लगता है.